मतलब क्या बोलूँ मैं, आई हैव नो वर्ड एट ऑल। whoever मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने हैं, ऐसे जाती हूँ। And I need all of you to stop what you're doing and listen. Hi guys, what's up? Welcome to my channel. I hope you all are doing well, and I posted a story on my Instagram कुछ दिन पहले. So I asked my followers to send me fake scenarios, and according to which I will style from my current wardrobe. So all in all, it's gonna be a very different and fun video, I believe, because obviously lockdown lift हो गया है, but we can't step out, and I think you should not step out unnecessarily because you know it's gonna create more groups and third wave. We don't want third wave to come, right? So don't step out unnecessarily and go vaccinate yourself. And yeah, with that, yeah, let's get into the okay, ये देख रहे हो आप मेरी फैंसी डायरी? Just look at it, it's magic. I just love it, इसलिए मैंने शूट में इसको लिया. Okay, coming back to the fake scenarios, वीडियो करना है मेरे को. Imagine you are doing a fun shoot with your pet. What would you wear in that case? मेरे पास पेट नहीं है एंड आई जस्ट वॉन्ट अ पेट. वो जो गाना है ना, नित नित तेरे उत निंदरा उड़ाइयाँ, उसको देख के मुझे मतलब आई जस्ट मतलब क्या बोलूँ मैं, आई हैव नो वर्ड्स, बट या I will shoot, I will style for it and I'll just come back. Okay guys, so I try to look cute as much as I can and yeah, पेट तो है नहीं तो हम लोग ऐसे ही इमेजिन कर लेते हैं कि क्यूट. पहले ना मैं बहुत डरती थी पेट से, बट नाउ आई हैव मेड पीस विद देम बिकॉज दे आर मोर क्यूटर देन ह्यूमंस, यू नो, sarcastic. Anyway, so I'm wearing this top which has polka dots, so मैंने सोचा क्यूट लगेगा with my pet, imaginary pet, and some ponytails बनाई है मैंने छोटी छोटी यहाँ पे, and hoops, and I'm wearing shorts. I'll probably add a clip over here. ऐसे black shorts पहने हुए मैंने, and yeah, oh, mic में चढ़ गई मैं. Lol, this is random me. Anyway, so yeah, I am trying to look cute, but I know I won't be look much cuter than my pet, my imaginary pet. कभी तो आ जाएगा. Anyway, so let's get back to next scenario. मैं खुद ही भूल गई क्या था. So let me take this. Imagine, so what will you wear when you are going to meet with a super sexy client? बड़ा ही मजा आने वाला है. Super sexy client. ऐसा होता है क्या? Clients are always. Anyway, हो सकता है, you never know. So let's get ready for that. Guys, here I am ready to meet my sexy client, and I know you guys might be probably thinking कि ये क्या short पहन लिया है, full covered, but guys, I believe you do you. That means कि you know, just no matter how sexy the client is, no matter whoever the going to, okay, whoever you're going to meet, you know, just wear in which you feel 100% confident, because you know वो अलग ही look आता है when you feel confident in your dress. And yeah, I was feeling confident in this satin shirt. This is speaking so much me. It is formal, it is giving me, you know, this fabric is giving me sexy and edgy vibe over here, glam vibe, and it's यहाँ पे knot है, so it's a little bit crop. So in this way it's giving me a sexy vibe, and I'm wearing skinny jeans. Say no to skinny jeans, but yeah, wildlife was not looking cool with this, and wearing some heels and statement jewelry. You know, formal jewelry is must, and sleek ponytail to give that clean look. And yeah, you are ready. So let's get back to the next fake scenario, because garmi lag rahi hai and I'm just dying with this satin shirt over here. So if you went to see your ex, guys, you're probably kidding me, but yeah, you gotta do what you gotta do. So let's go. So I'm ready to meet my ex, and I'm wearing this black top जिसको मैंने fold करके, and I've done this DIY midriff flossing thing, and it is looking sexy to me. And I'm wearing this loose high waist jeans on the bottom for the bottoms, and hoops, some you know, just थोड़ा सा glam up करने के लिए this winged eyeliner and lip shade. And yeah, this is all pasina going on over here because of so much heat. Please guys, go and just like this and just tell me how you are enjoying, because बहुत गर्मी में I'm shooting, so please थोड़ी मेहनत करिए. तो please आप भी थोड़ी मेहनत करें. Just go subscribe, hit the bell icon, just like this video, and yeah, enjoy with me. I'm just enjoying, but yeah, थोड़ी गर्मी है. But yeah, this is the look to meet my ex, and
गाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लुक सेक्सी ऑल द टाइम. मैं ऐसे भी जा सकती हूँ टू मीट माई एग, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ एंड मैं ऐसे भी जा सकती. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो लाइक दिस सेक्सी बन के. यू कैन गो यू नो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मिलना क्यों है अपनी एग से. एनीवे बहुत गर्मी है. लेट्स जस्ट go on the next fake scenario, and it will gonna be ये हो गया oh, this is my favorite. If you were a princess of any state of India, like wow, मज़ा आएगा. काश ऐसा होता. Guys, I think you are not ready for this. Just look at this look turned out, man. I'm just loving it. This pearl detailing, this dress, this जो sleeves की detailing है, it's like so princessy and Victorian. And जो earcuffs मैंने पहने हैं, oh god, like I'm totally digging this look. And thank you for this fake scenario. Khushi is my follower जिसने send किया था. Thank you for it. Oh god, I'm just feeling so princessy. एक पता नहीं मेरे दिमाग में गाना चल रहा है, अजीमो शान शहनशाह, बट मैं शहनशाह नहीं हूँ. आई एम अ प्रिंसेस. एंड दिस इज फ्लोई एंड स्लिट भी है यहाँ पे, जस्ट टू पारी प्रिंसेस जब पारी करेगी सब स्लिट दिखा के फिर पिक्चर्स क्लिक करा सकती है. एनीवे आई एम जस्ट डिगिंग दिस लुक. जस्ट गो एंड कॉमेंट इफ़ यू आर लविंग इट टू. एंड या मेरे को नेक्स्ट चेंज करने का मन नहीं कर रहा है, बट लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट फेक सिनेरियो, एंड विच इज इफ यू हैव टू मीट योर टिंडर डेट. Let's go. Right guys, this is what I would go wear on my Tinder date and go. So this is एक मेरे को कैंडी वाली फीलिंग आ रही है वैसे, बट दिस इज़ अ टाई एंड डाई स्ट्रैपी टॉप विच इज़ लुकिंग सुपर क्यूट. एंड एक क्लिप लगा ली है जस्ट टू एड फन विद एक्सेसरीज. एंड एक पेंट पहनी है मैंने, वाइट पेंट. आपने प्रोबेबली सारे मेरे वीडियोज़ में देखे होंगे. जस्ट लव दिस पैंट. एंड या इट्स ओके एंड आई थिंक अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू chill date, like in chill dates ही होती है I think Tinder पे. So yeah, that's what my idea is, because I'm not a Tinder person. That's not my priority. I'm not on Tinder, guys. So yeah, this is my Tinder date outfit. Just tell me how you guys liked it. Honestly, इतना मज़ा नहीं आया. इतना पसीना हो गया है ना. I just want to give up, but no. एक I think last fake scenario is left. Then I'll wrap up. So the next scenario is going for groceries shopping in lockdown. Okay. मैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने ऐसे जाती हूँ. So guys, ऐसे मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ. डबल मास्क, एनी रैंडम टी शर्ट, एंड बेसिकली आई वेयर माई लेगिंग्स, जिम योगा लेगिंग्स, एंड नो मेकअप. अभी मैं आई एम प्रोबेबली trying to film some reels after it. So make sure you follow me on Instagram. If you don't follow, I'm just trying to make my comeback, and it is so uneasy to speak in the mask. Anyway, so just no makeup, random t-shirt, and ऐसे मैं चल जाती हूँ अपनी grocery shopping करने guys, because बहुत ही tiring होता है. This is my look for my grocery shopping in the lockdown. Lockdown के अलावा मैं ऐसे ही जाती हूँ guys. Whenever I feel like, mostly कम ही होता है, whenever I feel like dressing up for my grocery shopping. So yeah, I think this was it for the video. These were the fake scenarios जो मुझे लगा कि मुझे स्टाइल करने में मज़ा आएगा. I hope you guys enjoyed it, and please अगर आप बोर हो रहे हैं, you want to feel something different and enjoy करना है, so just do it. And randomly अपने friends से virtually you can ask them some fake scenarios and dress up, and yeah, मज़ा आएगा. मुझे काफ़ी मज़ा आया अगर ये गर्मी थोड़ी कम होती तो, बट या all in all I enjoyed a lot. And before filming it I was like, how will I do it, and I was in a different zone. I was not, anyway that's a very different thing. हम कभी और बात करेंगे उस बारे में. So now I'm happy, as you can see. And so yeah, this was it for the video. And please, if you like my mehnat and all the looks, please go and subscribe to my channel and hit that bell icon and all पे click कर दें so notification मिल जाए. Most of you watch my videos but don't subscribe. Please don't do this to me. So please go and subscribe and share and enjoy and take care. I'll see you guys next time. Bye. Also,
दिस वॉज अ वेरी दिस इज़ मी, दिस इज़ रियल एक्चुअल मी, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ में आऊँ. आई एम जस्ट डन प्रिटेंडिंग गाइज. सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.